Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn decoupage art on kettle. If you enjoy this video, please like and comment. और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के प्रोजेक्ट के लिए मैंने स्मॉल साइज़ का केटल लिया है। इसके अलावा हमें जो भी सामान की आवश्यकता होगी उनका लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ये सारे सामान आपको किसी भी क्राफ्ट स्टोर में इजीली मिल जाएंगे या आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बेस बनाने की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए मैंने एक्रेलिक पेंट लिया है, वाइट एक्रेलिक पेंट लिया है या फिर आप जेसो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डेकोपाज ग्लू, वार्निश, कुछ फ्लैट ब्रश, स्पॉन्ज और नैपकिन की ज़रूरत पड़ेगी। बेस बनाने के लिए या तो हम जेसो लेंगे या वाइट एक्रेलिक पेंट लेंगे, दोनों में से जो भी आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल कोट करने के बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप डबल कोट लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जेसो ले लिया है। आगे वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि अगर इन सामान में से आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह और क्या इस्तेमाल करके डेकोपाज कर सकते हैं। डबल कोट जेसो के बाद हमारा केटल ड्राई होके रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने एक नैपकिन लिया है और डेकोपाज ग्लू लिया है। अगर आपके पास डेकोपाज ग्लू नहीं है तो उसे आप घर पे बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप 1 स्पून पानी लें और उसमें 2 स्पून फेविकॉल डाल के उसे अच्छे से मिक्स करें। आपका होममेड फेविकॉल डेकोपाज ग्लू रेडी है। यहाँ पे मैंने नैपकिन पेपर लिया है, इसकी जगह पे आप क्राफ्ट पेपर, लेज़र प्रिंट आउट, राइस पेपर, गिफ्ट रैपिंग पेपर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नैपकिन स्टिक करने से पहले हमें उसके बैक साइड से उसकी 2 लेयर निकालनी होती है। पेपर से डिज़ाइन निकालने के लिए हम पतली ब्रश और वाटर यूज़ करेंगे और इसकी कटिंग निकालने के लिए हम सीज़र के बजाय हाथ से ही इसे निकालेंगे ताकि इसमें नेचुरल लुक आए।
Now decoupage kettle is ready. If you wish, you can apply varnish on it. Hope you like this video. Please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.